and wellness. Meet the minds behind the mission and uncover secrets to their success. आइए सुनते हैं श्री अजय को, जो आज की बात की रूपरेखा से हमें अवगत कराएंगे। Herbalife is a global leader in health and wellness, dedicated to helping people live healthier, happier lives through science-backed nutrition products and a commitment to excellence. Our mission is simple but powerful: to improve lives by providing high-quality, science-driven nutrition solutions and fostering a culture of health and wellness across the world. Well, today I'm delighted to introduce to you three of our global leaders who are driving Herbalife's vision forward. Troy Hicks, our Chief Operating Officer, brings a wealth of experience in steering our global operations. Gary Swanson, who is the Senior Vice President of Quality Assurance and Control, and he ensures that every Herbalife product meets the highest standards of consumer safety and excellence. And last but not the least, David Walsh, Senior Vice President of Global Manufacturing, Distribution and Logistics. And he oversees the seamless operations that deliver quality products to millions of consumers around the world. In the conversation ahead, you will hear from these inspiring leaders about what drives them, their insights on quality and innovation, and their vision for Herbalife's future. It's a journey you won't want to miss. Hello, Mr. Ashutosh. What a pleasure. Good to see you. Good to see you. Hi, Hi. Mr. Troy. Good to see you. Great to meet you. Good to see you. I will leave it to you now. You prepare, please. Okay, thank you. I look forward to our discussion today. Me too. Let's go chat. Yeah. Sit someplace and have a conversation. Okay, Troy, so before we get into the more serious stuff, I want to know that you've been to India a bunch of times. Is there anything really surprising or unexpected that you've experienced here? Well, yeah, in my job, I get to travel the world, right? And I get to see all kinds of different places and cultures. But I would say probably the most unique thing about India is the people, the heart of the people. No matter what walk of life they are, they always have a smile on their face. And it seems like, they radiate their spirit, and it's infectious. And that's one thing I love about India. Second part is probably the food. Probably the most unique food I've ever had in my life. The spices, the flavors. Right. It's kind of depressing going back to the U.S. In fact, everything I eat, I think for weeks seems bland and tiring. So definitely the food as well. Oh, wonderful. And your journey has been incredible in terms of your career. I'm sure you've seen some great milestones, but tell me what led you to Herbalife? Well, it wasn't a straight line. As I was growing up in my younger years, I never really inspired to be a business executive or a COO. And in fact, That's such a contradiction, because I think you're born to be in this role, yeah? No? Well, it took a lot of personal and development and growth for sure. But when I was younger, I wanted to be a chef, and I went to culinary school. Okay. Yes. So I started really at 13 working in restaurants, and kind of evolved, and went to culinary school, wanted to be a chef. And then at one point really started learning the business side of restaurants. Started ordering the food and the provisions and finding unique ingredients for the kitchens that I was working in, and I found that very interesting, the sourcing side of unique foods and flavors. And then that got me into supply chain. Okay. And working in supply chains for the hospitality industry, which then led to consumer products, and really the rest is history. Wow. Yeah. That's quite that's quite a transition, but then how did Herbalife come about? So
It was actually probably, about 12 years ago. I got a random call from a recruiter looking for somebody that had experience with supply chain and global operations and consolidating supply chains through verticalization in manufacturing. As Herbalife was really looking to go into their own manufacturing at that time. And I didn't know what Herbalife was. I'd really never heard of it, to be honest with you. And wasn't interested in picking up my family and moving, and actually turned down the offer to explore the opportunity. And then from that point on, I saw Herbalife everywhere. The image of Herbalife, the brand of Herbalife, and I'm like, what did I say no to? About 6 months later, I guess they couldn't find the right person. Right. And it was very intriguing, and I went and was able to meet with the leadership staff and fell in love with the company and the culture, and the rest is history. I'm sure it is. In fact, Herbalife, and you spoke about being in the Yankee Stadium. If I'm not wrong, you've had quite some fitness goals for your own self. Tell me all about that. Yeah, a lot of it was inspired, I think, through my experience at Herbalife and certainly watching our distributors themselves. Right. Prior to Herbalife, I was always interested in just health and nutrition, but I never really was maybe consistent at it. Right. In coming to Herbalife, I really fell into love with triathlons. Then that involved into long distance running, so marathons. So I just finished my this past July in San Francisco. Hey, congratulations. Thank you. Sounds phenomenal. Definitely running is that hobby that helps keep me balanced in life and helps keep me not only physically fit, but mentally fit. Right. In fact, that's what brings me to my next question. What are your core values that you feel as an individual that you bring to the table, both personally and professionally? Yeah, one that really I think has been my philosophy for a long time is a Jim Rohn quote, which is work on yourself more than you work on your job. So the continuous pursuit of developing yourself and growing to see what you can make of yourself, right? And that really has served me well in life. It's trickled down to benefit my family, of course. And I think that's what life is about, right? You really never stop growing. Life is growth. Right. And how do you think these values actually affect the culture at Herbalife? I think it's, I look at Herbalife and I think what's unique about our company is we are all inspired by our distributors, right? Okay. The distributors themselves are a makeup of entrepreneurs that ultimately, lead with a positive mindset. So no matter what the challenge is, it can be overcome. As long as you lean into it in a very positive way. So I think that is how I would maybe describe the culture of Herbalife. Troy, leading a global team is no easy task, right? Like I can imagine across the world you're traveling probably at least 6 months a year if I'm not wrong. A lot of traveling is involved. How do you keep everyone motivated and aligned at the same time? I think it's two things. One, it's having a common purpose, right? And no matter what department you're in or what your responsibility is, we all sum up to a common purpose, which is the business outcomes as a company that we're trying to achieve, which are ultimately going back to that common bigger purpose and helping people better their lives and the communities that they live in. So for me, we all have that in common, no matter where you're at in this company throughout our 95 markets. The other piece is, again, one that inspires me from our distributors is just leaning and leading with a positive mindset. Okay. No matter what the problem is, if you really take a positive perspective, no matter the problem or the failure, you're going to learn something, you're going to grow through it, and you're going to get stronger. And that's something that my mentors have taught me, and I certainly try to emulate and pass on to my team as well. In fact, I truly feel that Herbalife's got such a strong performance-driven culture. How do you then set the tone for everybody else also? Yeah. I think leading by example is one thing that I truly believe in. I've never asked anything of my team that I wouldn't be willing to roll up my sleeves and do myself.
I also believe in continuous communication, transparency, and ensuring there's feedback loops so that we're constantly listening and learning with each other, right? We all have this common purpose together, no matter what your role is or what your responsibility is. And really managing and leading without boundaries. Never saying it's not my job. It's all our jobs to make sure the success of the organization and helping people improve their lives. Right. In fact, globally, I understood that Herbalife's got this thing for maintaining and ensuring quality of its products. How do you also ensure that this quality is maintained through and through? Yeah, it's a big job, right? And quality is not just the department, right? It is the philosophy of really our product supply chain and everything we do. And really building and designing quality into every process so that is what ultimately ensures it. It's not relying on a given person or a given test. It's actually relied on based on the integrity of the process through and through, from start, as we say, from the seed to the feed. All right. So Troy, during your field trips to India, have you had an experience which you cherish or is probably close to your heart, something exciting? Yeah, I think, I'll go back to the quality by design philosophy that we carry. Most recently, we had a very prosperous growth period here in India. And to be able to keep up with that growth, you certainly are stretched a bit in manufacturing and capacity. And quality and quantity don't always necessarily coexist very well, right? And one of my most proudest moments here in India was the confidence and the bravery of the team to be able to stop production lines when the quality was questionable or didn't meet necessarily the standards, and getting it right and making sure it's right. That in and of itself reflects, I think, the culture of our company, and it's always quality over quantity in Herbalife. That's really incredible. I'm not sure if I've heard too many companies doing that, stopping an entire production line just because the quality wasn't met. All right, Troy, it was an honor and pleasure speaking with you. You've been nothing but a delight, and all of these conversations have really led me to believe that Herbalife is dedicated towards quality and commitment. But yeah, thank you for your time. Thank you too. And look, this wouldn't be possible without a really talented team. One that serves us well every day. And there's two individuals I'd like to introduce you to. Our Senior Vice President of Global Manufacturing. All right. And Gary Swanson, our Senior Vice President of Global Quality. Great. I am looking forward to seeing them. Great. Okay. Thank you. Namaste. अगले हिस्से में हम गैरी स्वॉनसन और डेविड वॉल्ट से क्वालिटी एश्योरेंस और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नॉर्वे के पूर्व जलवायु और पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहाइम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी में वैश्विक शांतिदूत बनने के सभी गुण हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सही प्रकार की विदेश नीति है, वो तटस्थ रुख रखते हैं और अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एरिक सोलहाइम की टिप्पणी जो है वो ये है कि भारत किसी भी देश, विशेषकर अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। भारत केवल अपने हित का ख्याल रख रहा है। पीएम मोदी 3.0 शासन के तहत ये एकदम सही दृष्टिकोण है। ये दुनिया में अधिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कैसे कुवैत गुलामी से निकलकर इतना अमीर बन गया। कुवैत का इतिहास संघर्षों और पुनर्निर्माण का साक्षी रहा है। एक समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाला ये देश आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। आइए समझते हैं कि कैसे कुवैत गुलामी के दौर से निकलकर आर्थिक महाशक्ति बन गया। पहला, तेल की खोज कुवैत की किस्मत बदली। 1938 में कुवैत में पहली बार तेल के भंडार की खोज हुई। ये खोज कुवैत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तेल के निर्यात ने देश को अरबों डॉलर की आमदनी दी और इसे ग्लोबल एनर्जी सेक्टर का एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति और आत्मनिर्भरता।
1961 में कुवैत ने ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्रता हासिल की। स्वतंत्रता के बाद कुवैत ने अपनी अर्थव्यवस्था को संगठित तरीके से विकसित करना शुरू किया। राष्ट्रीय तेल कंपनियां बनाई गईं और संसाधनों का प्रबंधन कुवैती सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। तीसरा, मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण। कुवैत ने अपने तेल भंडार का उपयोग न केवल निर्यात के लिए किया बल्कि देश के विकास में भी लगाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया गया। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। चौथा, सॉवरेन वेल्थ फंड। कुवैत ने कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि KIA की स्थापना की, जो दुनिया का सबसे पुराना सॉवरेन वेल्थ फंड है। इस फंड में अरबों डॉलर का निवेश किया गया, जो कि आज कुवैत की आर्थिक स्थिरता का एक बड़ा आधार है। पांचवा, छोटे आकार और उच्च गुणवत्ता वाली जनसंख्या। कुवैत की आबादी केवल 43 लाख है। छोटे आकार की वजह से सरकार ने आसानी से अपने नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान किया। छठा, शिक्षा और प्रगति। स्वतंत्रता के बाद कुवैत ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। यहाँ की नई पीढ़ी को आधुनिक तकनीक और व्यवसाय में दक्ष बनाया गया। पढ़े लिखे युवाओं ने अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया। सातवां, राजनीतिक स्थिरता और कुशल शासन। कुवैत में राजतंत्र प्रणाली है, लेकिन यहाँ की सरकार ने कुशल नीतियों से देश को आर्थिक स्थिरता दी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश के दरवाजे खोलकर अर्थव्यवस्था को वैश्विक बनाया। आठवां, रणनीतिक स्थान का लाभ। कुवैत का स्थान तेल उत्पादक खाड़ी देशों के बीच है। इसका बंदरगाह व्यापार और ऊर्जा निर्यात के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। नवा, सामाजिक सेवाओं में निवेश। कुवैत के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सब्सिडी दी जाती है। सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश के संसाधन नागरिकों के कल्याण में उपयोग हो। 10वां, वैश्विक स्तर पर पहचान। कुवैत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाते हुए तेल के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, बैंकिंग और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में कदम रखा। आज कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा मानी जाती है। कुवैत का अमीर बनने का सफर संघर्ष और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। तेल की खोज, कुशल प्रबंधन और शिक्षा पर ध्यान देकर इस देश ने गुलामी के दौर से निकलकर दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में अपनी जगह बनाई। क्या बाकी देश भी कुवैत से कुछ सीख लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकता है? अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताएं। एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया तेल का खजाना कहती है, 1990 में उस पर कब्जा करना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को इतना भारी पड़ेगा, ये उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। कुवैत पर चढ़ाई करना सद्दाम के लिए शुरुआत थी, लेकिन इराक की तबाही का आगाज भी वहीं से हुआ। 16,000 की सेना, लेकिन कुवैत के पास इराक के 1 लाख सैनिकों के सामने टिकने की ताकत नहीं थी। पर क्या वाकई जीतना आसान था? सद्दाम ने 1990 में जो जुआ खेला, वो 1991 तक उसके लिए एक बुरे सपने में बदल चुका था। चलिए किस्से की शुरुआत वहीं से करते हैं, जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 1990 का साल था। सद्दाम हुसैन, जो पहले ही इराक का तानाशाह बन चुका था, उसने अपनी नजरें छोटे लेकिन तेल से भरपूर देश कुवैत पर गड़ा ली। अब इराक का हाल ये था कि ईरान इराक की 8 साल की जंग ने देश को खस्ताहाल कर दिया था। ऊपर से सद्दाम को लगता था कि कुवैत तेल निकालकर मार्केट में सस्ते दाम पर बेच रहा है और इराक की कमाई खा रहा है। सद्दाम ने कुवैत को इंटरनेशनल तेल मार्केट में दाम स्थिर करने की धमकी दी और कहा कि अगर हमारी बातें नहीं मानी तो इराक अपने हक छीन लेगा। लेकिन असली कहानी ये है कि सद्दाम तो पहले से ही प्लानिंग में जुट चुका था। 21 जुलाई 1990 को उसकी सेना ने कुवैत की ओर कूच करना शुरू कर दिया। सद्दाम को लगा कि अमेरिका शायद इस मामले में तटस्थ रहेगा। 25 जुलाई को बगदाद में अमेरिकी राजदूत एप्रिल गिलेस्पी से उसकी मीटिंग हुई। सद्दाम ने इशारों में साफ कर दिया कि अगर कुवैत समझौता नहीं करता तो वो एक्शन लेगा। लेकिन अमेरिकी राजदूत की ढुलमुल प्रतिक्रिया से सद्दाम को लगा कि अमेरिका चुप रहेगा। बस यहीं से सद्दाम ने वो गलती की जिसने इराक के विनाश की नींव रखी। 2 अगस्त 1990 रात के 2 बज रहे थे। 1 लाख इराकी सैनिकों ने टैंकों और हेलीकॉप्टर्स के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की सेना उस वक्त दुनिया की 4थी सबसे बड़ी और खतरनाक सेना थी। कुवैत के पास सिर्फ 16,000 सैनिक थे। कुछ ही घंटों में इराकी सैनिक कुवैत के दसमान पैलेस पहुंच गए।
कुवैत के अमीर और उनका मंत्रिमंडल पहले ही सऊदी अरब भाग चुके थे, लेकिन शाही परिवार के एक सदस्य शेख फहद महल में रुके रहे। वो महल की छत पर पिस्टल लेकर खड़े थे, पर उनकी बहादुरी का अंत बेहद दुखद हुआ। इराकी सैनिकों ने उन्हें वहीं मार गिराया। अब आइए मिलते हैं गैरी स्वॉनसन से, जो हर्बल लाइफ में क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे हर्बल लाइफ अपने हर प्रोडक्ट में उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करता है। Hi Gary, welcome to Nutrition Matters. My name is Nayan and I just have to say that you've been taking care of all the quality assurance across the world. What does it take to maintain this consistency throughout the channels? Well, first of all, thank you for having me here. We have a very simple but strategic process for maintaining and achieving product consistency. First of all, it's in the raw materials. Okay. All raw materials must be reviewed and approved before they're ever used in the manufacturing process. Okay. Second, we have a formula that must be qualified before it goes into manufacturing. All right. This includes developing and writing a manufacturing process. Okay. Having stability done on every product, Okay. and providing samples to the distributors before the product is sent to market. Finally, we have a product monitoring system Right. That monitors our products out in the marketplace. We have a team that ensures that our products are maintained to the quality standards that we expect. Wow. Okay. Also, Herbalife's facilities have, kind of gained this impressive certification. How does this reflect on the product's quality? Product quality standards are an additional testament to the quality that we establish in our products. Right. We validate claims through third-party testing Okay. to ensure that our products meet the standards and provide the consistency that we're looking for. Furthermore, what they do is they provide evidence to the distributors that our products are qualified and certified through many different ways. That's amazing. What a pleasure speaking with you, Mr. Gary. Thank you so much for your Thank you. time and effort. Thank you very much. I do hope to see you probably taking Herbalife to even greater success and heights under your leadership. Thank you again. Thank you. Thank you. अब जब हमने यह समझ लिया है कि हर्बल लाइफ अपने उत्पादों के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कितनी कठोर क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल प्रक्रियाओं का पालन करता है, तो चलिए अब चलते हैं डेविड वॉल्श के साथ और ध्यान केंद्रित करते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और David, managing global manufacturing and logistics is such a huge responsibility. How are you ensuring that all of this is running smoothly on a day-to-day basis? It's not about me, it's the team, like a cliche, but really working under me and all around me in Herbalife, we do have a fantastic team of people. Right. I mean, these are dedicated industry experts all throughout the Herbalife world, and none more so than right here in India. Really, I'm very fortunate to work with leaders and team members who are all so dedicated and innovative and driven and knowledgeable. And those are the ones that make it work. And they work so well together as well. They work so seamlessly together naturally. So it's the combined skills and experience that keep the bar high for Herbalife. And so, I do have a huge responsibility, but I sleep very well at night because I know the A-team is always on the job. That's really cool. I mean, to have such a good support system is what makes any company super successful. Also, just a quick question, that Herbalife's quality is seeming to exceed all kinds of regulatory standards and requirements. Can you share more about your team's role in this whole scenario? Yeah, sure. Well, firstly, I do want to point out that my team works very closely with all the other teams in Herbalife. So quality assurance, regulatory affairs, R&D, the technical teams. And as I said, in my team, but also in those teams, we have really the best industry experts. So we know what good looks like. Okay. And we know what great looks like. Oh, wow. And we build in great quality by design. So from ideation, if we're working for a new product or a new ingredient or even a new manufacturing process or technology, then from the beginning,
we're ensuring that we have products that distributors are going to be delighted with or consumers are going to be delighted with every time. Really nice speaking with you, David. Thank You've you. been nothing but phenomenal. And of course, I think as somebody who's a leader of the team, it takes a lot of effort to be able to do what you do. And I think you're doing it great. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you. आज का सफ़र बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। हमने शुरुआत की श्री अजय से, जिन्होंने हर्बल लाइफ के मिशन और इसकी विजन को आगे बढ़ाने वाले बेहतरीन लीडर्स के साथ मंच तैयार किया। ट्रॉय हिक्स की लीडरशिप फिलॉसफीज और व्यक्तिगत फिटनेस मंत्र से लेकर गैरी स्वॉनसन की गुणवत्ता के प्रति समर्पण और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में डेविड वॉल्श की विशेषज्ञता तक, हमने यह पता लगाया कि हर्बल लाइफ स्वास्थ्य और कल्याण का सही मायनों में अग्रणी क्यों है। Herbalife's commitment to quality and its gold standard guarantee remain unmatched, ensuring trust and excellence in every product. Thank you for joining us for this exclusive interaction with Herbalife's global leaders. My name is Nayan Parekh. Stay healthy, stay inspired, and we'll see you next time. और चलिए अब देख लेते हैं खेल जगत की 9 बड़ी खबरें स्पोर्ट्स टॉप 9 में। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में 2-0 से हरा दिया। अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में 8 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में एएम गजनफर ने घातक गेंदबाजी की। उन्होंने 5 विकेट झटके। हाल ही में मुंबई में उन्हें आईपीएल 2025 में एक ऑक्शन में खरीदा था। उन्होंने अब अफगानिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई। अंडर 23 स्टेट ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश के कप्तान समीर रिजवी ने त्रिपुरा के खिलाफ शनिवार को धमाकेदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट में समीर ने महज 97 गेंदों में 201 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके दौरान उन्होंने 13 चौके और 20 छक्के लगाए। आपको बता दें, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 95 लाख रुपए में खरीदा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 के पहले राउंड के मैच में कर्नाटक ने मुंबई को 7 विकेट से हराया। मैच में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 382 रनों का स्कोर बनाया। इस दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 114 रन की धुआंधार पारी खेली, लेकिन कर्नाटक की तरफ से केएल श्रीजीत के बल्ले के आगे कुछ नहीं चल सका। विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच बंगाल और दिल्ली के बीच खेला गया। मुकाबले में बंगाल ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 272 रन बनाए। जवाब में बंगाल ने 41.3 ओवरों में मैच जीत लिया। इसमें अभिषेक पोरेल का शानदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने 130 गेंदों में 170 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चिट्ठी लिखी। इसमें पीएम ने उन्हें और उनके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी गोल्डी कुमारी का चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पुरस्कृत करेंगी। गोल्डी को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें, गोल्डी थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के दौरान शॉटपट और जैवलिन थ्रो में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। मणिपुर ने नारायणपुर में राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए खेली जा रही 29वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप बंगाल को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मणिपुर ने सेमीफाइनल मुकाबले में दूसरे हाफ में 3 गोल दागे बंगाल को 3-0 से हराया। हॉकी के प्रति लोगों में रुचि बढ़ाने के लिए हॉकी इंडिया लीग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 2024-25 के सभी मैचों के टिकट मुफ्त होंगे। गवर्निंग कमेटी के चेयरपर्सन दिलीप तिर्की ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि मुफ्त टिकट से हम हर वर्ग के व्यक्ति को हॉकी का लाइव आनंद लेने का मौका दे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर अहम अपडेट मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया इस ट्रॉफी में 3 ग्रुप मैच खेलेगी। पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा न्यूजीलैंड से हो सकता है। इंडिया का पाकिस्तान से 23 फरवरी को मुकाबला हो सकता है। सेमीफाइनल में पहला 4 मार्च, दूसरा 5 मार्च को हो सकता है और फाइनल मैच 9 मार्च को खेला जा सकता है। रोज बदलती है दुनिया, लड़ती है दुनिया, अमन की बात करती है दुनिया।
सर्वोच्च सम्मान कुवैत के अमीर ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। यह किसी देश की ओर से पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पंजाब के मोहाली में 4 मंजिला इमारत गिरी, अब तक 2 लोगों की मौत। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ और सेना। बेसमेंट में खुदाई के दौरान हादसा। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई। बाहरी दिल्ली में संदिग्ध पाए गए 175 लोगों की पहचान। दस्तावेजों के आधार पर कथित पैतृक घरों पर पुलिस की दबिश। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और ये सम्मान जो है कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को यहाँ पर दिया है और इससे सम्मानित उनको वहाँ पर किया गया है। पीएम मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल